Jai Hind everyone. My name is Gaurav Kumar, Assistant Professor in CSE Department. This video is regarding the data analytics and its processes. How data analytics help in decision making, how data analytics help in to finding out the identifying the problems and its uses and their steps which will help in finding the solution of that particular problem. Firstly, we will discuss about the definition of the data analytics. What is data analytics? The collection, transformation and organization of data to draw a conclusion or make future prediction और मेक इन्फॉर्म्ड डेटा ड्रिवन कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स. मतलब कलेक्शन है, ये कलेक्शन है हमारे पास, या ट्रांसफॉर्मेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी चीज़ों का जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकती है. किसके बेसिस पे? पुराने जो डेटा हमारे पास आएंगे, मतलब जो प्रीवियस डेटा सेट्स हमारे पास आएगा उसके बेसिस पे मैथमेटिकल मॉडल्स टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स to finding the future prediction which will happening, maybe or may not be. This is known as what? Data analytics. And the person who is performing the different mathematical operations on that data set is known as data analyst. उस पर्सन को जो डेटा एनालिटिक्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस या मॉडल्स को परफॉर्म करेगा उसे हम क्या कहते हैं? डेटा एनालिस्ट. So, moving further, there are 6 steps in data analytics. Firstly is defining the problem. Second is collecting data, cleaning the data, analyzing the data, data visualization, and presenting the data. These are the 6 different steps which will help to finding out the problem and presenting to the stakeholder what is the problem and what can be or cannot be the solution of that particular problem. First step is the defining the problem. We have some particular problem which we have a deep knowledge about that problem. एक कोई भी हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी जिसकी हमारे पास क्या होनी चाहिए? डीप नॉलेज. जितनी हमारे पास डीप नॉलेज होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा. किस लिए? कि उस प्रॉब्लम की वो प्रॉब्लम क्यों जनरेट हुई है, किस लिए जनरेट हुई है और वो प्रॉब्लम क्या क्या इफेक्ट कर सकती है. तो इसलिए क्या है, हमें उस प्रॉब्लम की डीप नॉलेज बहुत जरूरी है, जो कि हमें किससे मिलेगी? एम्प्लॉयज से मिलेगी या फिर स्टेक होल्डर्स जिसे कहते हैं. स्टेक होल्डर्स से हमारे पास हमें नॉलेज मिलेगी. ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि उनकी के प्रॉब्लम्स क्यों जनरेट हुई है, कैसे जनरेट हुई है. द सेकेंड स्टेप इज कलेक्टिंग द डेटा. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द what the problem will be, what was the problem, not will be, what was the problem. The second step is collecting the data. Means we will collect the data specific to that problem. मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ वही डेटा कलेक्ट करना है जो उस प्रॉब्लम को, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए चाहिए. मतलब कलेक्ट, हाँ, सिर्फ और सिर्फ उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, चाहे वो हमें कहाँ देयर आर डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन कलेक्ट द डेटा. द सोर्सेज कैन बी इंटरनल, एक्सटर्नल एंड सोशल मीडिया. We will discuss about the sources in previous videos. We will collect the data specific to that problem from internal source, external source or social media posts. After collecting the data, the third step is cleaning data. What does it mean? Cleaning the data मतलब जो कि हमारे पास डेटा आएगा वो इनकम्प्लीट ना हो. हम ये इंश्योर करेंगे वो इनकम्प्लीट ना हो, नॉइजी ना हो. अगर incomplete, if the incomplete data arrives, that it will make error or it will not be able to find out the exact or predict the exact solution of the problem. तो हमें ये इंश्योर जरूर करना पड़ेगा कि वो इनकम्प्लीट और नॉइजी ना हो. ये इनकम्प्लीट डेटा क्या होता है? कोई भी डेटा फील्ड मिसिंग है. नॉइजी क्या है? डुप्लीकेसी है. कोई भी डेटा हमारे पास है और उसके जरूर चाहिए कुछ, हमें उन्होंने अपलोड कुछ या भेज कुछ दिया है, तो हमें ये क्लीन करना पड़ेगा उसके हिसाब से. फोर्थ स्टेप है एनालाइजिंग द डेटा. एनालाइजिंग मतलब हम वी विल
analyze the data means we will implement the models on the data which we come from the third step. मतलब हम ये कौन कौन से मॉडल उस डेटा पे लगाएं जिससे कि हमारा उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन हमें मिल जाए. तो एनालाइज करेंगे कि कौन सा मॉडल इसके लिए सही रहेगा. और द नेक्स्ट स्टेप इज डेटा विजुअलाइजेशन, दैट इज फिफ्थ स्टेप. डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स वी विल visualize the data in the form of graph, different types of graph, which will help to understand the problem of that which will help to understand the problem exactly कि what will be the problem, या कैसे हमें वो उस problem का solution मिल सकता है after visualization of different data sets. Now last step is presenting the data. तो जो हमने विजुअलाइज किया है, जो भी हमारा डेटा आया था, उसको हमें दूसरे जो स्टेक होल्डर है, जिसने हमें वो प्रॉब्लम बताई थी, वो उसका सॉल्यूशन हमें उसे बताना है डिफरेंट विजुअलाइजेशन फॉर्म के, उसके सामने प्रेजेंट करना है, जिससे कि उसको वो डेटा समझ में आ सके, प्रॉब्लम समझ में आ सके कि वो प्रॉब्लम क्या थी. विजुअलाइज प्रेजेंट करना है लास्ट स्टेप में कि ये प्रॉब्लम थी, ये उसके हमारे पास रिगार्डिंग डेटा आया है, हम ये मॉडल लगाएंगे और ये फ्यूचर में प्रेडिक्ट हो सकता है कि ऐसा हो. दीज आर द स्टेप्स: डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कलेक्टिंग डेटा, डेटा क्लीनिंग, एनालाइजिंग द डेटा, डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटिंग द डेटा. दीज आर द 6 steps. And moving forward, we have the types of data analytics. There are 4 types of data analytics, which are predictive data analytics, descriptive data analytics, prescriptive data analytics, and diagnostic data analytics. These are the 4 types which data analytics have. In this video, we will discuss about the predictive data analytics. What is the predictive data analyst and how it can help in finding the problem, या in finding the future predictions. Prescriptive data analytics, what will be the, how can we make it happen, prescribe करेगा. And in predictive data analyst, it deals with the what will happen in the future, means it predict what will be, what trends come into the future. And in diagnostic data analytics, it deals with why did it happen, ऐसा क्यों हुआ. और in descriptive, it describes the problem, what deals with what happened in the past, कि लास्ट इससे रिगार्डिंग पास्ट में क्या हुआ था. डायग्नोस्टिक क्या करेगा, व्हाई इट हैपेंड. प्रेडिक्टिव डेटा एनालिस्ट क्या, डेटा एनालिटिक्स क्या करेगा कि व्हाट विल बी द फ्यूचर, कैसे फ्यूचर में हम इसके साथ डील कर सकते हैं. और प्रेस्क्रिप्टिव, हैपन कैसे हुआ, मतलब क्यों कैसे हुआ था. In predictive data analytics, these are the techniques which is given in this PPT. First is decision tree, second is regression, and this is the neural network. These are the different techniques which is used in the predictive data analytics. In decision tree, we will make a tree form which yes and no and predict the future trends. In regression there are different formula and models which use regression, linear regression, multiple regression, depends upon the data sets. A neural network, this is the neural network form. There are different neural network, ANN, CNN, which is used to predict the future predictions. In this video, we will discuss about linear regression of predictive data analyst. That this is the regression in this linear regression. It is a technique, ये मॉडल कह लो, क्या करता है कि एक रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. दो वेरिएबल्स के बीच के जो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी है, ये बताएगा कि जो हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है x के ऊपर, ये x, और ये b1 है, बीटा 1, और ये बीटा नॉट, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो डिपेंड, और y क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, कि वो कैसे इफेक्ट करेगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे इफेक्ट करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ये एप्सिलॉन है.
This is epsilon. Y is dependent variable and x is independent variable. This is the error term which will occur in performing the this operation. This is the simple linear regression. This is known as simple. It can be the multiple regression, linear regression. If multiple regression, then y equals to beta plus beta x1 plus not x1 beta 2x beta 3x and plus epsilon. It can be a multiple which have many independent variable or dependent variable. It can be. These are the steps in linear regression. To performing this operation, we have different steps. First is data collection, second is data pre-processing, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल एवोल्यूशन एंड प्रेडिक्शन. डेटा कलेक्शन मींस जैसे हमने वहाँ किया था, डेटा कलेक्ट करना है हमें लीनियर रिग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए. जो जो डेटा हमें चाहिए हमें वो डेटा कलेक्ट करना होगा. डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, ये इंश्योर करेंगे डेटा हमारे पास जो आया है वो एक तो इनकम्प्लीट ना हो और नॉइजी ना हो. अगर नॉइजी होगा तो उसे हम या तो कि कोई टेक्निक यूज करेंगे उसे एलिमिनेट करने की या फिर उसे रिमूव करना पड़ेगा. मॉडल ट्रेनिंग मींस हमें कौन सा मॉडल बेस्ट सुइटेबल होगा उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. एवोल्यूशन मींस कि जो हमने मॉडल लगाया है वो कितना प्रेडिक्ट कर पा रहा है हमारे ऑपरेशंस को. और इसमें प्रेडिक्शन में हम प्रेडिक्ट करेंगे कि जो हमने ऑपरेशन लगाया था या मॉडल लगाया था कि वो हमारा सही प्रेडिक्ट कर भी पाया या नहीं कर पाया. इट इज द एडवांटेज simplicity, efficiency and interceptability. It is simple to implement, it is efficient and it is imperceptible. Disadvantages are linear assumption and multicollinearity. And these are the application which is where we can use linear regression. This is the finance sector, marketing sector, healthcare sector and real estate sector. These are the different sector where we can implement linear regression. We can perform linear regression for making future predictions. This will help in performing the future prediction in these different sectors: healthcare, finance, real estate, and this all. And this is all about today. Thank you.